So we talk about the education, primary, secondary, and tertiary. So what is the issue? Government for LACNAS and way forward. So importance of education. What is the importance of education? So education is the most important tool for social, political, and economic transformation. It is important means for socio-economic mobility and key instrument for building just society. It strengthens democracy by providing the citizen the necessary tool to participate in governance. It strengthens democracy by providing the citizen the necessary tool needed to participate in governance, and it acts as an integrated force by imparting value to foster the social custom and national identity. So importance क्या है, तो it is the most important tool for socio-economic and political transformation. It is an important means for socio-economic mobility कि आपको नीचे से ऊपर जाना है socio-economic environment में. So education can be a mean and key instrument for building a just society and strengthen the democracy by providing the citizen the necessary tool needed to participate in the governance, and it acts as an integrative force by imparting values that foster social cohesion and national identity. सो इश्यूज अगर देखें क्या है एजुकेशन सेक्टर टिल 8th स्टैंडर्ड, प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर की बात करें 8th क्लास तक. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड एंड सॉफ्ट, यहाँ पे हम पैसे की बात नहीं कर सकते कि फ्री है 8th स्टैंडर्ड तक. तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड एंड सॉफ्ट, लैक ऑफ टीचर्स बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, problem with learning outcome. For example, as a report highlighted that the major problem with the primary education is poor learning outcome and lack of proper codification of curriculum with respect to desired groups and objective, the lack of awareness among parents. डिजायर एज ग्रुप के लिए ठीक है कोडिफिकेशन ये करिकुलम का, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स. फिर सर्व शिक्षा अभियान अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड and lack of quality education, still education is governed by ideological culturation. For lack of education in the mother tongue. Under right to education there is a provision for the age specific enrollment of the student which result to poor learning outcome. age specific enrollment होता है poor learning outcome, बच्चों के हिसाब से नहीं देखा जाता. वन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटीज ऑन टीचर, एक्स्ट्रा ड्यूटीज किस पे लगाई जाती है टीचर पे. लैक ऑफ प्री स्कूल ट्रेनिंग, नो डिटेंशन पॉलिसी, नो फियर ऑफ गेटिंग फेल्ड. फिर यहाँ पे गवर्नमेंट रिफर्स क्या है, राइट टू एजुकेशन आया सर्व शिक्षा अभियान के अंदर है, विद्यांजलि को करिकुलम एजुकेशन वॉलंटरी एफर्ट्स लगा सकते हैं. फिर बड़े भारत हरे भारत, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का रीडिंग स्किल्स बढ़ाना. फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एपीजे अब्दुल कलाम का इनिशिएटिव था, इनोवेशन बढ़ाना, इंक्यूजिटिविटी बढ़ाना. मिड डे मील स्कीम हो गया. फिर हमारा के सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कोडिफिकेशन बोला है कि कोडिफिकेशन होनी चाहिए लर्निंग आउटकम का. एंड कदियम श्री हरि कमेटी बैठाई गई थी तो प्रमोट द गर्ल एजुकेशन. फिर लैकुनास क्या है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजन बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, lack of awareness among the people with respect to rights and entitlement. Government expenditure on education sector is only 3.4% of GDP, which should be minimum 6% of GDP. There is a lack of implementation of provision of the which will impact the overall quality of the teachers. So there is a lack of implementation of provision of the provision of teacher training, which will impact the overall quality of education. 25% of EWS quota remains unfulfilled. दिल्ली में सबसे अच्छा है 44% और बाकी जगह 0% है, केरला, आंध्र प्रदेश. फिर हमारा सजेशन क्या है, नेशनल ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी इज गिवन बाय TSR सुब्रमण्यम. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन, नो डिटेंशन पॉलिसी शुड बी डिजर्व आफ्टर 5th स्टैंडर्ड. टू डेवलप norms for learning and outcome, to promote inclusive education and student support, provide education in mother tongue at least till 5th standard. Educational curriculum should be focused on promoting Indian culture, values and traditional knowledge. So we talk about the secondary education. What are the issues? It is not free and compulsory. So market driven education is lacking and skill aspect of education is missing. NSO report ने बताया था कि skill aspect of education is missing. Lack of vocational training, high rate of girls drop out due to lack of functional toilets. Girls that performing household chores. And midday scheme is not provided. Lack of accessibility. Government deferred. There is a scheme known as Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan suggestions. Provide basic minimum infrastructure with respect to secondary education. Promote the adolescent education and sex education. Extend midday meal scheme to the secondary level. Provide skill development in market driven curriculum at secondary level. Promote e-learning. Massive open online courses, MOOC. Massive open online courses to promote accessibility and outreach of education system.
तो हायर एजुकेशन इश्यूज क्या है? अफोर्डेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन, लैक ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, शॉर्टेज ऑफ फंड विच इम्पैक्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी वर्क प्लेस एंड लिमिट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, lack of practical curriculum, lack of multidisciplinary approach, shortage of good quality faculties. In Scandinavian countries, teacher, especially primarily education, is the highest paid job. Overall issue exists with respect to access, equity, quality and financing. So एक है हमारा PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, है फॉर हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी. मेजर प्रॉब्लम विद द हायर एजुकेशन इज फाइनेंसिंग. IIM बिल आ गया है. So there's a destiny of the nation shaped in the classroom.